Good morning, students. I am back. So, as you can see from the picture, today I am going to explain you an important poetry of from Flamingo for class 12th, A Thing of Beauty, written by John Keats. First of all, I would like to tell you the theme. The very first line of the poem recites the theme that any beautiful object is always treasured in our mind as it gives us eternal and everlasting joy. So बच्चों थीम क्या है? तो थीम जो है वो उसकी फर्स्ट लाइन ही है लाइक द वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ द पोइट्री इट सेल्फ टेल्स अस द थीम. और पोइट क्या कहता है? अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर मीन्स इट इज़ अ टाइप ऑफ ट्रेजर which we store in our mind and it will give us eternal and everlasting joy. The happiness given by it never fades into nothingness but multiplies manifold. Okay? ये बढ़ती चली जाती है, दुगनी तिगुनी बढ़ती चली जाती है, क्योंकि अगर वो हमें खुशी नहीं दे पा रही है तो फिर अगर वो हमारे माइंडसेट को चेंज नहीं कर पा रही है, वो नेगेटिविटी से हमें बाहर नहीं निकाल पा रही है, तो दैट थिंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ थिंग ऑफ ब्यूटी. ओके. Poetic devices I have discussed in the current image. You can see that I have told you the poetic devices used in this poetry. I have also mentioned the words and the lines or the phrases in which what figure of speech is being used. Like first, you can see metaphor. Bower quiet, sweet dreams, Paul, wreathing a flowery band, endless fountain. इन सारे words और phrases में हमें metaphor मिलेगा. So you can note down in your book. Alliteration, noble natures, band to bind, cooling covered, alliteration is being used. Imagery, flowery bands, daffodils, clear rills, cooling covered, grandeur of the dome, sandless fountain. Here metaphor is being used. And yes students, ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक पर्टिकुलर वर्ड में दो फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुई हो, मीन्स एक ही फ्रेज में आपको दो फिगर ऑफ स्पीचेस मिल रही हो, जैसा कि यू मस्ट हैव नोटिस्ड. ओके. Let's come to next. The next poetic device is being used here is symbol. Simple sheep. According to Christianity, when the Jesus Christ came into the world, onto the earth, simple sheep, human beings were considered as simple sheep, and Jesus Christ was considered as shepherd who was there to protect us, to protect the human beings. Okay, so simple sheep is a symbol of human being. Oxymoron, where two opposite words are used. So in mighty dead, oxymoron poetic device is used. Hyperbole, endless fountain, जहाँ हम कोई चीज़ को hyper ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बताते तो endless fountain. Transferred epithet यूज़ हुआ है gloomy days में, unhealthy over darkened ways में. Transfer मीनिंग को ट्रांसफ़र किया गया है. gloomy days, days थोड़ा ना gloomy है, लेकिन यहाँ पर days को gloomy दिखाया गया है. Okay. And the last one I have discussed you, the rhyming scheme. You have to choose. If the question comes like that, you have to decide, you have to tell the rhyme scheme, then you have to see the paragraph carefully, then you have to mark the rhyme scheme. Okay, but in this poetry the rhyme scheme is AABBCC. Okay, the summary. The poet tells us about the beauty and its values and its importance to human beings. पोइट ने क्या बताया कि ब्यूटी क्या है, उसकी वैल्यू क्या है और इंसान की लाइफ में उसकी इम्पॉर्टेंस क्यों है. आखिर क्यों हमें थिंग ऑफ ब्यूटी चाहिए? क्योंकि हमें कुछ ना कुछ इंस्पिरेशनल आइडियाज़, कुछ मोटिवेशन चाहिए ताकि हम अपनी लाइफ को स्मूथली रन करते रहें, हमारी लाइफ स्मूथली रन होती रहे. ब्यूटीफुल थिंग्स गिव्स अस eternal joy. According to John Keats, beautiful things are those which give us an eternal joy. It offers humans the constant opportunity to reflect on that beauty. वो हमें constant क्या देती है? opportunity कि हम find out करें what is beauty, what is actually considered as beauty in our life. केवल वो चीज़ें जो हमें इंस्पायर करती हैं, जो हमारे नेगेटिव माइंडसेट को चेंज कर सकती हैं, वो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं. ओके,
It seems that the person who gets the thing of beauty enjoys happiness and healthy life full of sweet dreams. वो इंसान जिसे थिंग ऑफ ब्यूटी मिल गई है वो क्या करता है, वो स्वीट ड्रीम, जब वो सोता भी है तो स्वीट ड्रीम्स आते हैं, नाइट मेयर्स नहीं होते, वो डरता नहीं है, उसे कल की टेंशन नहीं होती, वो टेंशन फ्री लाइफ जीता है. येस वी नो दैट लाइफ इज़ फुल ऑफ डिफ़िकल्टीज़. ऐसा नहीं है कि सबके लिए लाइफ इज़ बेड ऑफ रोजेज. ऑफ कोर्स difficulties, hardships, and obstacles must be there. But a thing of beauty gives us a strength to overcome those obstacles, according to John Keats. And it happens really in life if we can check it by ourselves. Yes, we know that life is full of difficulties and sufferings, but beauty has the ability to produce happiness एंड टेम्परली शिफ्ट द बर्डन्स दैट ह्यूमन बेयर. वो हमारे माइंड से उस बर्डन को शिफ्ट करने की कैपेसिटी रखता है जो हम लाइफ में फेस करते हैं. चैलेंजेस और ऑब्स्टेकल्स सबकी लाइफ में हैं, लेकिन हम उसको ओवरकम करने की जो स्ट्रेंथ है वो कहाँ से आ रही है, वो ब्यूटी दे रही है, वो चीज़ जो हमें इंस्पायर करती है लाइफ को अच्छे तरीके से जीने में. The poem gives a list of beautiful objects which are example of natural beauty. पोइट ने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को मेंशन किया है, बहुत सारे नेचुरल थिंग्स को मेंशन किया है कि दे कैन बी कंसिडर्ड एज beauty. And yes, he is reflecting, he is emphasizes again and again that natural things are the thing of beauty, because outer appearance cannot be considered as beauty, it will fade away with the passage of time. So only the natural things or natural beauties can be considered as a thing of beauty. So the list is as daffodils, sun, moon, musk rose, cleorals, etc. John Keats also tells that beauty can be found in art, such as the lovely tales we have heard or read about our mighty dead. आर्ट में कोई आर्ट भी हमें इंस्पायर कर सकती है, जैसे हम कोई खूबसूरत कहानियाँ पंचतंत्र की स्टोरी सुनते हैं या कोई और स्टोरीज़ जो हमें अपने माइटी और पावरफुल एंसेस्टर्स के बारे में सुनी हैं जो हमें इंस्पायर करती हैं, लाइक आर फ्रीडम फाइटर्स, दे कैन बी कंसिडर्ड एज अ थिंग ऑफ ब्यूटी. Here the poet gives us a description that our mighty dead, the stories related to our ancestors who are our mighty deads, can be considered as a thing of beauty, because they had did mighty deeds in their lives, so they would be given a royal life after death. ये हम इमेजिन करते हैं कि क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स ने एक रॉयल लाइफ को जिया, उन्होंने अच्छे काम किए, तो डूम्सडे पर जो जजमेंट का डे होगा अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी, उनको रॉयल लाइफ या हेवन ही मिलेगा उनके अच्छे कर्मों की वजह से, एक्शंस की वजह से. तो दिस थिंग्स ऑल्सो इंस्पायर अस कि हमें भी अच्छे काम करने चाहिए. All of these forms of beauty act as an endless fountain of immortal drink. ये जो सारी forms दी हैं beauty की, वो they have a particular action, उनके कुछ functions हैं, और functions क्या हैं, that they will work as an endless fountain of immortal drink which allows humans to forget dark reality and experience joy. क्या करेगा वो जो एंडलेस फाउंटेन है, वो अलाउ करेगा ह्यूमन बींग्स को कि वो फॉरगेट करें, वो भूल जाए डार्क रियलिटी ऑफ लाइफ की, मुसीबतों को, प्रॉब्लम्स को, हार्डशिप्स को, और वो एक्सपीरियंस करें किसे, जॉय को. This poem therefore focuses on the theme of happiness and how it can be experienced. तो क्या फोकस है पोइट्री का, कि हैप्पीनेस क्या है और उसे हम कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं. It inspires us and gives us the courage to fight against all odds. कि हमें सारे odds के against fight करने को inspire करती है. Okay, thank you. Keep studying. I will try my best to finish all the poetries, all the chapters within this limited time so that you can prepare well for your board examination. Thank you, students.